Okay, first read out the sum. A fire broke out in the premises of Messrs. Bad Luck Limited on 31st March 2017, resulting in disruption of company's business until 31st August 2017. Okay, so the fire broke on 31st March 2017. Now that particular fire has a consequentive result. Okay, and for that purpose the business was hampered. Okay, the disruption of the company's business মানে হচ্ছে কোম্পানির বিজনেসটা হ্যাম্পার হয়েছিল, ঠিক আছে, রিজাল্টিং ইন আ ডিসরাপশন অফ বিজনেস কোম্পানিজ বিজনেস আনটিল 31st August 2017. The company is insured under a loss of profit policy for rupees 1,44,000 with a 6 months period of indemnity. Okay, so the insurance company will give you a period of 6 months as an indemnity. Okay, so they thought of to recover from the loss of fire you just need 6 months time at most. ওকে, আমি ম্যাক্সিমাম 6 মাস টাইম একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাকে রিকভার করার জন্য দিতে পারে, ঠিক আছে। আফটার দ্যাট পার্টিকুলার পলিসি উইল নট বি ইন এফেক্টেড। Now, the firm's accounts for the year ended 31st December 2016, that means the previous year, showed a turnover of 9,60,000 with a net profit of 72,000. The amount of standing charges covered by the insurance is 1,68,000. That means it is simply the insured standing charges. Okay, just read out the line. Amount of standing charges covered by insurance. Okay, that means insurance company kitna standing charges ko cover up karega, that is 1,60,000. It is nothing but the insured standing charges. Next, turnover for the year ended 31st March 2017 was 7,20,000. Okay, turnover for the year ended 31st March 2017, that means the 31st March में year end हो रहा है, so the year will start from 1st April 2016 as actually they have mentioned. year ended मतलब 12 months का टोटल लास्ट 12 months का सेल्स कितना है 7,20,000 जस्ट फायर के पहले. During the disruption it was during the period of disruption it was 1,08,000, whereas during the corresponding period in the previous year it was 3,12,000. That means turnover, दो टर्नओवर दे दिया है, ठीक है। एक बोल रहा है पीरियड ऑफ डिसरप्शन, दैट मीन्स मेरा जो इंडेमनिटी पीरियड है, ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड द सेल वाज 1,08,000 एंड फॉर द सेम पीरियड इन द प्रिवियस ईयर द सेल वाज 3,12,000. তার মানে আমি যদি জিনিসটাকে শর্ট আউট করি, জাস্ট ইট উইল লুক লাইক দিস, বিকজ অফ দ্য ফায়ার দ্য সেল ওয়াজ হ্যাম্পার্ড অ্যান্ড দ্য সেল ইজ অনলি 1,08,000, but as there was no fire in the previous year the sale was 3,12,000. যখন ফায়ার ছিল না সেল হয়েছিল 3,12,000, এখন ফায়ার হওয়ার পর সেল হয়েছে 1,08,000. Now, a sum of rupees 21,120 was expended to mitigate the effect of the loss. That means it is actually your what? It is actually your additional expenses. Admissible additional expenses, this is the additional expenses were accepted without limitation, but there was no saving standing charges as a result of the fire. Ascertain the claim to be submitted to the respective in respect of the consequential loss policy. এইটা একটা আরেকটা নাম আছে, ঠিক আছে, মানে লস অফ প্রফিটের আরেকটা নাম আছে, আমি বলেছিলাম হয়তো, কনসিকুয়েন্সিয়াল লস পলিসি। ওকে, সো হোয়াট এভার দ্য স্টেপস আই হ্যাভ মেনশন আই উইল ফলো দ্যাট থিং। ওকে, জাস্ট আমি যেরকমভাবে করছি আমি সেরকমভাবেই কিন্তু সামসটা হবে, এটা ভাবিস না যে এটা অন্য কিছু হবে। সো আই এম জাস্ট রাইটিং দ্য সলিউশন। Okay, first number one, what you have, number one is my date of fire. Just আমি যেভাবে লিখেছিলাম আমি কিন্তু তাই করছি। ইফ ইউ এবল টু সি, দরকার নেই, ছেড়ে দে, পরে পরে জাস্ট ক্লারিফাই করে নিই। ডেট অফ ফায়ার, so what is your date of fire? Date of fire is given, just look at here, 31st March 2017. so আমি ওরম ভাবে লিখছি না, 31/03/2017. so this is your date of fire. Number two, indemnity period. Indemnity period is what? Indemnity period, they have mentioned a period of 6 months, but the company's actual disruption period is actually 31st March to 1st August. so আমি ওই পিরিয়ডটা লিখবো, though they have given me 6 months, but actually if you calculate April, May, June, July, August, so they have taken 5 months to recover,
Actually, insurance company given a period of 6 months to recover, or rather they have allowed us a period of 6 months to recover, but the company took actually 5 months to recover. Company 5 months recover kore geche. Okay, so that will be considered. Okay, so the indemnity period will be considered as the next day of fire, that means 01/04/2017 to 31/08/2017. Okay, so your indemnity period is 1/4/2017 to 31/8/2017. Now with that I will write something which is extra, that is just write down the same period but in the previous year. এই পিরিয়ডটাই লেখ, জাস্ট শুধু আগের বছর করে দিবি, ঠিক আছে? ইটস লাইক 01/04/2016 to 31/08/2016. নাও ইউ ক্যান আস্ক মি স্যার ওয়াই ইউ হ্যাভ রিটেন দিস পার্টিকুলার থিং। ওকে, কেন এটা লিখলেন? ঠিক আছে, এটা দরকারটা কী ছিল? দরকার একটা জায়গায় ছিল, ঠিক আছে। Okay, it is required to identify what is the period of indemnity and what is the period corresponding to the indemnity. Okay, আমাকে এইটার জন্য লেখার দরকার ছিল, because the sale of this period, এই পিরিয়ডের সেলটাকে বলা হবে, the previous year sales will be considered as standard turnover and the period of sales of this particular period will be considered as a actual turnover. ঠিক আছে, so this will be standard turnover, this will be actual turnover, just like this. Okay, so second point have been done. Next we come to the third point. Okay, third point is my rate of gross profit. Now what is the formula that I have mentioned? The formula I have mentioned, if you remember, then the formula will be net profit plus insured standing charges divided by net sales into 100. Okay, so the thing is, I'll write here net profit plus insured standing charges divided by net sales, together with you have to multiply into 100. Okay, so this is your formula for the rate of gross profit. Now net profit plus insured standing charges divided by net sales into 100. Now just come to the next line. Okay, I'm not just putting that particular figure, ঠিক আছে, আমি ফিগারটা পুট করছি, ঠিক আছে। উই হ্যাভ নেট প্রফিট, আমার কাছে নেট প্রফিট দেওয়া আছে। জাস্ট সি দ্যাট ইন দ্য প্রবলেম দে হ্যাভ মেনশন দ্যাট দ্য নেট প্রফিট ওয়াজ 72,000 and the standing charges is 1,68,000. So I can write it as your net profit is 72,000 plus 1,68,000 divided by your net sales is how much? The net sales have been given that the previous year's turnover is 9,60,000. দেখ কথাটা একবারে লেখা আছে, the firm's accounts for the year ended 31st December 2016 showed a turnover of 9,60,000 with a net profit of 72,000. The amount of standing charges covered by the insurance is 1,68,000. So both the lines have been included during the calculations. Net profit 72, insurance standing charges 1,68,000, your net sales is 9,60,000 and multiplied with what you have, multiplied with your 100. Okay, now the answer will be, calculate করতে হবে, can anyone calculate and tell me? ক্যালকুলেটরটা তাহলে পার করতে, আচ্ছা আমি ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি, ঠিক আছে, ওয়েট জাস্ট আ মিনিট। 72,000 plus 1,68,000 divided by 9,60,000, ও 424,96 কত পার্সেন্ট আসছে? 25%. Okay, so it came as 25%. Okay, so the rate of gross profit is 25%. Okay, understood that particular point? Just I need to put that all these things, ঠিক আছে, just accumulate all the things and put it. Okay, there is nothing more about it. Okay, so this is your rate of gross profit. Next, number 4, short sell.
Okay, the formula for the short sale is standard turnover minus actual turnover. Okay, so on the next line I will write this as equals to turnover from 1/4, আমি একটু শর্টে লিখছি, হ্যাঁ, 1/4/2016 to 31/8/2016. this is a whole thing, এটা এটা একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে থাক, because this signifies your standard turnover, because standard turnover मतलब क्या होता है, standard turnover मतलब होता है जिस पीरियड में फायर ऑकर नहीं हुआ, तो 2016 में मेरा कोई फायर ऑकर नहीं हुआ था, ठीक है. सो द टर्नओवर फ्रॉम 1/4/2016 to 31/3/2016 माइनस turnover from 1/4/2017 to 31/08/2017. दिस इज योर एक्चुअल टर्नओवर. जस्ट यहाँ पर दो चीज़ देख लो, ठीक है. स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब जहाँ पर फायर नहीं ऑकर हुआ था, दैट मीन्स 2016, और एक्चुअल टर्नओवर मीन्स जहाँ पर फायर ऑकर हुआ था, दैट मीन्स योर 2017. नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर मैंने वो पीरियड क्यों लिखा, ठीक है. देखो 1/4/2017 to 31/8/2017, दिस रेफर्स टू योर स्टैंडर्ड टर्नओवर, सॉरी एक्चुअल टर्नओवर. ये पीरियड का जितना सेल होगा उसको बोलेंगे एक्चुअल टर्नओवर, और इस पीरियड का जितना सेल होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर. जस्ट लुक एट हियर, मैंने यही लिखा है, ठीक है. अब इसका रेलेवेंट फिगर्स कितना है, अच्छा बोला है पीरियड ऑफ डिसरप्शन, दैट मीन्स द एक्चुअल थिंग. ओके, दैट मीन्स 2017 में डिसरप्शन था, 2016 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है. 2017 में डिसरप्शन था, उस टाइम पे सेल हुआ है 1,08,000. कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड प्रीवियस ईयर, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड दैट मीन्स सेम पीरियड प्रीवियस ईयर, उसमें कितना सेल है, द 3,12,000. सो आई डिडक्ट, we have to deduct the both the thing. Okay, so the thing is equals to 3,12,000 minus 1,08,000, তাই তো ছিল, 3,12,000 minus 1,08,000. So your result will be 2,04,000. 2,08,000. Okay, 2,04,000. So it is your short sell. Okay, so the short sell you have calculated your number 4, your short sell is 2,04,000. Now we come to point number 5, GP on short sell. GP on short sell. Okay, now GP on short sell means it is rate of gross profit into short sell. Okay, simple. So short sell into rate of GP. Okay, so on the next line, what is your short sell? Your short sell is 2,04,000 multiplied with your rate of gross profit is 25%. Okay, so the result will be 51,000. 51,000. Thank you. Okay, so your rate of gross, your GP on short sell is 51,000. Okay, now point number 6, computation of admissible additional expenses. इसका रूल्स क्या था, द रूल इज एक्चुअली लीस्ट ऑफ द
ফলোয়িং, ओके बोल, अच्छा अच्छा, ना 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 ना, এটা এখানে হবে না, লিস্ট ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली। उसके बाद तुम्हारा क्या था, उसके बाद तुम्हारा जो रूल्स था मैंने बताया था तीनों पॉइंट दिखा के। जस्ट अ मिनट, हम एक बार शो कर दे उसको, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एक बार चेक दिखा देते हैं, समझ जाओगे। ओके नाउ हियर दिस इज द अमाउंट ऑफ एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस। उसमें क्या था, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, एक है तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, जीपी ऑन एडिशनल टर्नओवर जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस, एंड देन योर एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। दीज आर द फॉर्मूला। इसमें जो छोटा होगा वही लेना पड़ेगा, बट द थिंग इज दैट इस सम में उतना कुछ करना नहीं है, बिकॉज वाई सो, देखो a sum of rupees 21,100 was expended to mitigate the effect of the loss. Okay fine, this is your additional expenses. Expended मतलब तुम उसको खर्चा कर रहे हो, ठीक है। 21,120 you have expended or you have incurred to mitigate the effect of the loss. Mitigate मतलब to lower the effect of the loss actually. Okay, और ऐसे बोल सकते हैं कि उस लॉस को बाईपास करने के लिए तुम वो खर्चा कर रहे हो, and were accepted without limitation. Okay, now that is a very important thing, were accepted without limitation. That means इंश्योरेंस कंपनी पूरा 21,120 अलाउ करेगा एज अ एडिशनल एक्सपेंसेस। सो मुझे बाकी कुछ कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दे हैव मेंशन। ओके, एंड वर एक्सेप्टेड विदाउट लिमिटेशन, मतलब कोई लिमिटेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। कोई लिमिटेशन इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई नहीं करेगा। सो एज अ रिजल्ट दे विल टेक दैट पर्टिकुलर 21,120 एज अ एडिशनल एक्सपेंसेस। सो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, हम जहाँ पर पॉइंट लिख रहे थे, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस। ओके, सो आई विल राइट हियर रुपीज 21,120। अच्छा, इसके जगह पर हम ब्रैकेट में एक मेंशन कर दे, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द होल amount without limitation। মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কোনো লিমিটেশন দেয়নি, ওরা পুরোটাই অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। সো আমরা এটা লিখে দিলাম ডাইরেক্টলি, ঠিক আছে। জাস্ট আই নিড টু রাইট অ্যাজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অ্যাকসেপ্ট দ্য হোল অ্যামাউন্ট উইদাউট লিমিটেশন। তাহলে আমার 21,120 ইজ মাই হোয়াট ইউ হ্যাভ, ইট ইজ ইয়োর কম্পিউটেশন অফ অ্যাডমিসেবল অ্যাডিশনাল এক্সপেন্সেস। হ্যাভেন্ট বিন রিটেন দ্যাট পার্টিকুলার লাইন, যদি লাইনটা না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের ওই তিনটে স্টেপ করে দেখাতে হতো, ঠিক আছে। আই হ্যাভ টু कैलकुलेट ऑल द 3 स्टेप्स, মানে যে তিনটে 1 2 3 1 ABC तीनों का कैलकुलेट करके जितना जो छोटा होगा उसको निकालते रहे, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 6 हैव बीन ओवर। नाउ ग्रॉस क्लेम। Now gross claim is, what is your gross claim? First one, GP on short sale plus amount of admissible additional expenses minus savings in insured standing चार्जेस। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जीपी ऑन शॉर्ट सेल प्लस एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। सो इक्वल्स टू, देखिए जीपी ऑन शॉर्ट सेल मेरा कितना था, जीपी ऑन शॉर्ट सेल आया था योर 51,000 प्लस व्हाट यू हैव GP on short sale plus amount of admissible expenses 21,120, okay, and your saving in insured standing charges, they have mentioned nothing is there as a saving in insured standing charges, so it is nil, okay। So your result will be কত হচ্ছে 72 72,120 72,120। so your gross claim is 72,120 is your gross claim। now next point number 8, just calculate first one, policy value। policy value, what is your policy value? Policy value they have mentioned in the question, just see that
policy value mentioned in the question, yes, 1,44,000. Okay, policy value is 1,44,000. Next, what we have, GP on annual turnover just preceding the date of fire. GP on annual turnover just preceding the date of fire. Now GP rate तुम्हें पता है वो 25% है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. GP rate is your 25%, so no, I guess no problem in that. But it should be multiplied with that particular thing what I have said, that just annual turnover just preceding the date of fire. ये कितना है देखो, यहाँ पर एक चीज बोला था, ठीक है. turnover for the year ended 31st March 2017 was 7,20,000. look at here, your date of fire is 31 2017. उस ईयर एंड मतलब 31st मार्च में अगर ईयर एंड होगा तो ईयर स्टार्ट कब होगा? द ईयर विल स्टार्ट ऑन 1/4/2016. ओके, तो ईयर 1/4/2016 में स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है 31st March 2017 में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ 12 months. ड्यूरिंग दैट देयर विल बी अ सेल ऑफ 7,20,000. okay, so that will be taken as, or that will be considered as, what you have, that will be considered as your annual turnover just preceding the date of fire. date of fire 31st March 2017 था, 17 था, उसके पहले वाला 12 मंथ्स का कितना सेल है, उसका पहले वाला 12 मंथ्स का सेल है तुम्हारा 7,20,000. सो द आंसर विल बी 1,80,000. 1,80,000. ठीक है. सो जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर जस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, सो इट इज 1,80,000. अब देखो तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू 1,44 एंड योर जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इज 1,80,000. सो आई विल राइट हियर as policy value is less than GP on annual turnover just preceding the date of fire, comma, then the policy, no sorry, then gross claim is subject to net claim. Okay, the gross sorry, gross claim is subject to average clause. The gross claim is subject to average clause. Therefore net claim equals to policy value, sorry, gross claim into policy value divided by GP on annual turnover. Yeah, policy value divided by GP on annual turnover just preceding the date of fire. আচ্ছা, এটা আমার এই লাইনে আসবে না, ঠিক আছে, ও আসবে না, আমি আনাবো, ঠিক আছে. তো দিস ইজ ইউর ফর্মুলা. তাহলে যদি পরের লাইনে আমি ফর্মুলাটা পুট করি, ইউর গ্রস ক্লেম 72,120 multiplied with your what we have, that particular policy value is actually what policy value we have already calculated, that is your 1 lakh, that is given actually, so I'm not calculating that. Policy value is 1,44,000 and your GP on annual turnover you have just calculated is 1,80,000. so the answer will be, answer please, 72,120 into 144 divided by 180. okay, it is 57,696. okay, so that will be your answer. okay, so just see that I've just
just see that, just see this number 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, just 8 step, follow that step, sum will be over. Okay, no need to no need to make some ledgers account, no need to make some journal entries, nothing. Okay, this, it is a complete statement based thing. Okay, so this is your first sum of that particular loss of profit policy.